Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Akansha Parimu. Let's take a look at what made news this week. POGB left in the shadows, governance failures highlighted at UN. PM Modi's vocal for local push energizes Udhampur artisans this festive season. JNK launches special drive to promote Kashmir's rich art heritage. And India's Srinagar sees enthusiastic participation in Red Run Marathon for AIDS awareness. In our Incredible India segment, we'll take you to Ooty, nestled in Tamil Nadu's Nilgiri Hills and fondly called the Queen of Hills. Beyond its misty vistas and tea gardens, this hill town delights visitors with its signature handcrafted chocolates. On the sidelines of the 60th UN Human Rights Council session, political activist Sherbaz Khan from Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan exposed Pakistan's systematic exploitation of the region. The region remains under Pakistan's tight control, where taxation, land leasing and resource exploitation occur without local consent. Decades of political exclusion and governance failures have left its people marginalized, demanding urgent international scrutiny and accountability. We have a report. On the sidelines of the 60th UN Human Rights Council session, political activist Sherbaz Khan from Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan exposed Pakistan's systematic oppression in the region. He highlighted illegal taxation, economic exploitation, and lack of political representation, stressing that unaccountable governance had worsened social and financial hardships. His remarks underscored how Islamabad's policies continue to silence local voices and undermine public welfare. Gilgit-Baltistan is a disputed area in terms of United Nations, and there is a lot of interruptions from Islamabad, because when you are not in a constitutional position, you are a disputed area, so you must be treated as a disputed area. And the resolution of UNO, we are disputed area. So then why you are nowadays, you ask me about now what are the situation about taxation. They impose, first of all, the now people demanding, when you are from poor provinces of Pakistan and then you are like a deny, you are outside of and you are a disputed area. So why you are impose taxes on the people of Gilgit-Baltistan? Resource-rich POGB faces decisions on land and development imposed without local consultation, fueling resentment and uncertainty. Recent floods have devastated communities, yet the government has provided minimal support, leaving residents to rebuild roads, water systems, and homes themselves. Strategic projects, including cross-border economic corridors, further sideline local voices, highlighting how systemic neglect continues to threaten livelihoods and erode trust in institutions. अभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इस वक्त जो है सैलाब का जो है एवरीवेयर, ये जो सैलाबी जो है बारिश हुई, ये जो क्या कहते हैं इसको जो है आउटब्रस्ट जो, तो वो एवरीवेयर जो है सारा जो है गांव के गांव तबाह हो गए। जब वो ये चीज़ें जो है आप वो पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट है जो नेशनल डिज़ास्टर का जो डिपार्टमेंट है,
वो जो है इनएफिशिएंट, सिर्फ जो है वो सिर्फ मैसेजेस वो करने के लिए है, बकाया जो है कोई उसका जो है ऑन ग्राउंड जो है कुछ भी नहीं है। तो लोग कहते हैं जब वो करते हैं तो सेल्फ जो है, सेल्फ हेल्प कम्युनिटीज़ जो है खुद जो है उन्होंने रोड वो किए, खुद जो है वो पानी के नाले जो गांव-गांव जो है पानी नहीं था, सारा जो है सेल्फ, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो है वो बैठ के जो है वो डिक्टेशन देना और जो है वो खाओ पियो इस तरह की जो चीज़ें हैं। The landscape of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, rich in natural resources yet politically marginalized, underscores the urgent need for international attention. Without meaningful reforms, unaccountable governance will continue to dominate. Recognition of local rights, adherence to human rights norms, and empowerment of communities are essential to ensure that residents can exercise their agency and safeguard their heritage and resources. In a powerful stride towards self-reliance and cultural revival, Prime Minister Narendra Modi's Vocal for Local Swadeshi Apnao initiative is transforming lives across the nation. In the Union Territory of India's Jammu and Kashmir, the campaign is empowering local artisans, especially potters who are witnessing a surge in demand for traditional earthen lamps and clay products ahead of Diwali. This growing preference for indigenous goods is not only strengthening livelihoods but also celebrating India's rich heritage and craftsmanship. Have a look. Prime Minister Narendra Modi's appeal for Vocal for Local Swadeshi Apnao is steadily gaining momentum, driving a significant rise in demand for indigenous products across India, especially in Jammu and Kashmir. A notable example of this impact is Sevaram, a potter from Udhampur district who has been crafting earthen products for over 3 decades. Following the Prime Minister's call to support locally made goods, his work has surged remarkably with traditional lamps and clay items seeing exceptional demand, helping artisans like him revive their livelihoods and preserve cultural craftsmanship. हमने सारी ज़िंदगी यही काम किया है। अभी मिट्टी के बर्तन का ही बनाते हैं सारा, त्योहारों का सामान हो गया जो, उसके बाद आ जाते हैं अपने नवरात्रों के लिए जो सामान पूजा का इस्तेमाल होता है, फिर दिवाली का दिया छोटा बड़ा हर वैरायटी टाइप जितनी भी है ना वो हम बनाते रहते हैं ना। पिछले कुछ सालों से जो है जब से मोदी साहब जी ने जो अपील की कि अपना देश का बना हुआ दिया इस्तेमाल करो और हमारा बना हुआ माल जो इसकी मांग मार्केट में बढ़ गई है। हम लोगों को यही मैसेज करते हैं कि भाई जो प्रदूषण करने वाले हैं, मोमबत्ती का दिया है, मोम का दिया है और कोई इलेक्ट्रिक दिए जलाते हैं, चलो इससे जो देसी दिया जलाओ जिससे प्रदूषण भी नहीं होता है और वातावरण शुद्ध होता है। More people are now choosing Swadeshi products for their everyday needs and festive occasions, giving a fresh boost to traditional crafts. Handmade lamps, clay pots and decorative items are witnessing growing demand as locals actively support artisans in their neighborhoods. This shift is creating new opportunities for families who had previously struggled to sustain their livelihoods. With every purchase, communities help preserve cultural heritage while strengthening the local economy, ensuring that traditional craftsmanship continues to thrive. आपने देखा होगा कि हमारे ज़िले में कम से कम भी 50 से ज़्यादा फैमिली हैं जो हाथों से बनी चीज़ें बनाती हैं, जैसे दिए हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, डेकोरेशन का सामान हो गया, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमारी 50 से ज़्यादा फैमिली बनाते हैं। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ बोला हुआ है तो हमें देखने को आ रहा है कि इन चीज़ों में काफ़ी इजाफा हुआ है। पहले ये चीज़ें लुप्त होती जा रही थी, अब हमें देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी ढाओ स्वदेशी अपनाओ, इससे हमारी जो लोकल लोग हैं उनको भी काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे वो इन चीज़ों को छोड़ रहे थे क्योंकि उनका रोज़गार नहीं चल रहा था, लेकिन अब आप मार्केट में भी जाओगे, एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। ये अच्छा स्टेप है, मैं सबसे अपील करता हूँ कि इन चीज़ों को लो। The central government's Vocal for Local Swadeshi Apnao initiative is contributing significantly to the overall development of Jammu and Kashmir. Alongside improvements in infrastructure, education and healthcare, support for local artisans, handicrafts and traditional industries is creating sustainable livelihoods and boosting the economy.
Programs promoting skill development, entrepreneurship, and indigenous products are empowering communities, preserving cultural heritage, and generating new opportunities. These efforts are driving economic growth while fostering pride in local craftsmanship across the Union Territory of Jammu and Kashmir. In a commendable initiative, the Jammu and Kashmir government has launched a special drive titled Know Your Artisan to promote the rich art and craft of the Kashmir Valley. Renowned globally for their intricate and exceptional handwork, Kashmiri artisans have earned prestigious recognitions, including Padma Shri and several national awards in recent years. This initiative not only honors their talent, but also provides a valuable platform to preserve and celebrate the region's cultural heritage and artistic legacy. Take a look. To showcase Kashmir's centuries-old craftsmanship and honor the dedication of artisans who safeguarded this legacy through decades of challenges, the Department of Handicrafts and Handlooms has launched a special campaign titled Know Your Artisan. Set along the iconic banks of the Jhelum River, this initiative invites locals, students and visitors to explore the region's traditional artistry and timeless cultural heritage up close. डेफिनेटली आई वुड से कि कश्मीर का आर्ट तो काफ़ी यूनिक है. मैं भी जब से यहाँ पे आई हूँ, यहाँ का कल्चर एंड आर्ट मुझे काफ़ी यूनिक लगा है. बहुत सारी चीज़ें जो कश्मीर कश्मीर की बहुत सी अलग सी हैं, है ना. एंड उसके पीछे वो कैसे बनती हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो जानना बहुत ज़रूरी है. पश्मीना जैसे कि शॉल देखते हैं, ठीक है, तो टूरिस्ट आते हैं, वो कहते हैं इतनी महंगी क्यों है ना. तो अगर हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे तो देख के पता चलेगा कि इसके पीछे बहुत मेहनत का काम है. On this special occasion, the Director of Handicrafts, along with officials, local business leaders and civil society members gathered to engage with prominent artisans from the valley. The event featured live demonstrations of traditional crafts such as pottery, pashmina weaving, wood carving, carpet weaving and wool spinning. These hands-on showcases drew significant interest, especially from students, offering them a closer look at Kashmir's rich and diverse artistic heritage. हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट एक ब्रांड प्रमोशन का कैंपेन शुरू कर रहा है बाय द नेम ऑफ सोलफुल कश्मीर. उसमें हमारा एक इनिशिएटिव है नो योर आर्टिजन. फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर थिंकिंग कि टाइम आ गया है कि हम अपने नेशनल अवार्डीज को, पद्मश्रीज को, शिल्प गुरुज को और जिन्होंने स्टेट और यूटी लेवल अवार्ड्स जीते हैं, उनको हम फेस टू फेस लाएं विद जनरल पब्लिक, स्पेशली विद द यंगर जनरेशन. इन सब्सिक्वेंट मंथ्स हम और भी उन जगहों पे जाएंगे जहां पर लोगों का ठीक ठाक स्प्रिंकलिंग रहती है, ताकि दे कम टू फेस हमारे आर्टिजन्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनकी स्टोरीज को सुने, क्राफ्ट को अप्रिसिएट करें, ताकि जो लेगेसी हमारी है, हेरिटेज क्राफ्ट लेगेसी जो है, वो हमारे आने वाले जनरेशन तक भी पास ऑन. In a highly appreciated move, the artisan community praised the Department of Handicrafts and Handlooms for launching a meaningful initiative to uplift traditional crafts. The drive provides a dedicated platform for skilled and experienced artisans to showcase their unique work, helping preserve Kashmir's rich artistic traditions while also giving these master craftsmen the recognition and identity they truly deserve. बहुत अच्छा किया इन्होंने. ये कोशिश एक है कि ऐसा हो, सारे क्राफ्ट यहाँ, कुछ क्राफ्ट जमा है और क्राफ्ट कश्मीर में है. अल्हम्दुलिल्लाह ये है अवेयरनेस, एक एडवर्टाइज है. असल तो कश्मीर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए दूसरे मुल्कों में कश्मीर क्राफ्ट क्या है और लोगों को सही तरीके से समझाना और उनको दिखाना अच्छा चीज़. ये और होना चाहिए, और स्टेटों में होना चाहिए. ये जो हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ भी ये होना चाहिए, क्योंकि जो नया तबका है उनको भी समझ आया कश्मीर क्राफ्ट क्या है. कश्मीर क्राफ्ट में फोकस है, ये काम कर सकते हैं पढ़े लिखे आदमी, वो दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ ये काम कर सकते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है. The special drive, Know Your Artisan, reflects the Jammu and Kashmir administration and government's strong commitment to preserving and promoting the valley's rich cultural heritage. By providing artisans a dedicated platform to showcase their unique craftsmanship, this initiative not only revitalizes traditional arts but also boosts local livelihoods.
Such progressive efforts highlight the overall development and vision of the Jammu and Kashmir administration in empowering communities and preserving Kashmir's timeless legacy. In an inspiring move, Srinagar witnessed the energetic 5-kilometer Red Run Marathon organized to raise awareness about HIV/AIDS. Students, youth groups and community members came together to participate in this vibrant event, promoting health, fitness and social responsibility. The marathon, a collaborative effort by local universities and the J&K AIDS Control Society, aimed to educate people about HIV prevention, encourage a healthy lifestyle and reinforce the importance of staying mentally and physically fit. Let's take a look. A 5-kilometer Red Run Marathon organized by the J&K AIDS Control Society to promote awareness about HIV/AIDS was successfully held in Srinagar. The event commenced from Foreshore Road near the University of Kashmir and witnessed enthusiastic participation from students across various colleges and university itself. This initiative aims to educate the youth on HIV prevention, encourage healthy lifestyles and strengthen community engagement in the fight against HIV/AIDS. मेन चीज यही है कि अवेयर करे लोगों को कि HIV जो एड्स है इससे निजात पाएं, खासकर यूथ, टारगेट यूथ ही है और यूथ ही इसका ब्रांड एम्बेसडर है कि सारे दुनिया को ये मैसेज पहुंचाए, खासकर मुल्क हिंदुस्तान को कि एड्स को मुल्क से दफा करें और अपनी जो जिंदगी है इसको हम ख्याल रखें, ड्रग्स हो या एड्स हो, इसको यहाँ से मिटाना है। ये यूथ का एक मोटो है, यूनिवर्सिटी का मोटो है, J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी का मोटो है, वतन का मोटो है, मोदी जी का मोटो है और हमें इस मुहिम के साथ सबको जुड़ना चाहिए और सबको एक साथ एक ही पेज पे आना है और सारे लोगों को इन्फॉर्म करना है कि दिस इज इट। और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से जो टॉप 2 पोजीशंस होंगे वो नेशनल लेवल का कंपटीशन हो रहा है नागालैंड में उसमें वो शिरकत करेंगे। The marathon aimed to raise awareness about HIV/AIDS and eliminate the stigma associated with the disease by actively engaging the youth. Students participated enthusiastically, running with banners and placards that carried messages of prevention, awareness and compassion. Through this initiative, the organizers sought to encourage open conversation about HIV/AIDS, promote responsible behavior and inspire the younger generation to contribute to creating a healthier and more informed society. आज जो हमारा रेड मैराथन है इसका यही एक संकल्प है हमारा कि HIV से हमने अपनी जान बचानी है और हमारी जो यूथ है खासकर इसको हमने इस चीज़ से दूर रखना है। हमने अपना जो नेशन है HIV फ्री बनाना है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारा पूरा कुंबा आगे बढ़ सके, हमारी पूरी वादी आगे बढ़ सके। उसके चलते हुए आज ये एक संकल्प लिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक कोलैबोरेट करके एक मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो वर्ल्ड वाइड आप देख लेंगे बाद में। और ये एक बड़े पैमाने पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कि काफ़ी लोग शमूलियत कर सकें इसमें और HIV के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहे कि ताकि सब लोग इस चीज़ में आगे बढ़ सकें। The marathon was flagged off by the Honorable Minister for Health and Medical Education, Ms. Sakina Itu, alongside Professor Nelufar Khan, Vice Chancellor of the University of Kashmir. Both leaders addressed the participants, highlighting the critical role of education and awareness in combating HIV/AIDS. They encouraged students and the youth to actively participate in such initiatives, stressing that knowledge and community engagement are key to preventing the spread of the disease. जो इवेंट आज यहाँ पे हुआ है जिसको कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया था ताकि ये जो आज यहाँ से बच्चे जिनको फ्लैग ऑफ किया गया है यहाँ से यूनिवर्सिटी तक जाने का इनकी रेस जो है वो ये है कि यहाँ इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है यहाँ ड्रग्स की वबा जो है काफ़ी हद तक फैली हुई है और जो ये बच्चे इसमें हमें मदद कर सकते हैं, चाहे बच्चियां हों चाहे बॉयज़ हो, अगर ये निकलेंगे और हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है मेंटली फिट रहे ताकि हर चीज़ में चाहे इनकी पढ़ाई हो चाहे आगे लाइफ में जो भी इनको
मुश्किलें फेस करनी पड़ी या चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, उन चैलेंजेस को आसानी से ले सके। आज का प्रोग्राम जो आप सुबह सुबह देख रहे हैं, बहुत ही ह्यूज नंबर में पार्टिसिपेशन है। हमारे बच्चों की, कॉलेज के बच्चे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ये इन कोलैबोरेशन है, हमारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर कोलैबोरेट कर रहा है विथ JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी JNK की। और ज़रूरी है, ऐसे इवेंट्स करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, फॉर देयर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर देयर मेंटल डेवलपमेंट। और एक रीज़न हमें मिल जाता है कि हम बच्चों को एक एक्सपोजर दे दे एनवायरनमेंट की। सुबह सुबह आपने देखा कि बच्चों को कितना एंथुसियाज्म है कि वो इस जो रन में हिस्सा ले ले। एंड आई एम श्योर दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। The Red Run Marathon in Srinagar stands as a testament to the JNK administration's proactive efforts in promoting public health and eradicating anti-societal elements from the valley. By organizing such large-scale initiatives, authorities are not only raising awareness about HIV/AIDS but also engaging the youth in positive community-driven activities. These efforts reflect a commitment to creating a safer, healthier and more informed society where education, awareness and collective action empower the younger generation to resist harmful influences and contribute to the valley's overall progress. Nestled in Tamil Nadu's Nilgiri Hills, Ooty, the Queen of Hills, is famed for its misty landscapes, cool climate and sprawling tea gardens. Yet beyond its scenic charm, it entices visitors with a sweeter treasure, handcrafted chocolates that every tourist relishes before leaving. Cradled in Tamil Nadu's Nilgiri Hills, Ooty is renowned for its breathtaking landscapes, lush valleys and soothing climate. But beyond its natural beauty, the town has a sweeter claim to fame: its delectable handmade chocolates, a treat that has become an essential part of the Ooty experience. The chocolate industry, which began during British rule, has grown into a vital part of the town's economy. Ooty's cool weather and pristine environment makes it perfect for crafting chocolates, drawing tourists to too many shops brimming with handmade delights. Most chocolates are still prepared and packaged by hand using traditional methods, though small machines are now employed to maintain hygiene. Range, it starts from 300 to 8,000 rupees per kilo. And mainly we focus sugar-free chocolates also for the elder peoples who are most conscious about sugar. We have zero sugar chocolates which has 100% cocoa, and we use alternative sugars like stevia, avarampu and other things to give a flavorful varieties of chocolates. The chocolates owe their irresistible taste to unique, traditional methods of preparation, with local residents, especially women, playing a vital role in this thriving craft. Ooty's shops and markets brim with a dazzling array of flavors: milk, dark, white, mint, coffee, strawberry, orange, almond and cashew, enticing visitors of all ages. From curious children to chocolate-loving adults, tourists eagerly sample and take home these handcrafted delights, making them a sweet highlight of every trip. I saw quite amazing variety of chocolates, and the premium ones were actually very tasty. I have tried the other commercial chocolates. What we have is more of sugar and less of chocolate, but here you can feel that authentic taste, and it was really a good experience. Ooty's handmade chocolates have become a hallmark of the city, attracting both domestic and international visitors. Shops bustle with people eager to take these treats home, and the famous Choco Story even features a chocolate museum showcasing the journey from cocoa seeds to finished creations, including unique doll-shaped chocolates. They have a museum here where they will show the chocolate making history and the
the homemade chocolate culture that Ooty possesses. So that is something that is new for us, and and I have very good childhood memories coming to chocolate museums and factories in Ooty. But yeah, it's a time to cherish all those old memories. Until recently, Ooty was celebrated mainly for its natural beauty and tea gardens. But over the past few decades, it has also earned fame for its delicious handmade chocolates. These streets have become an essential part of the tourist experience, ensuring that every visitor leaves with a sweet memory and a delightful souvenir to take home. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.